Hello students, today my topic is user interface. So I want to say what is user interface. User interface means interacts the communication between the user and systems. Means the interaction of system and users. The goal of user interaction is the effect the all operations effect the all operations and control the machines by the users. For examples, हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस की. यूजर इंटरफेस की जैसे हम कोई कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड या माउस पर हम डाटा को इनपुट करने के लिए हमारे द्वारा क्लिक किया जाता है माउस या कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस किए जाते हैं. तो दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ यूजर एंड कीबोर्ड्स हार्डवेयर डिवाइसेस and in ATM machine we touch the keys in ATM machines and touch screen. So in ATM machines touch screen and input keys is the interaction between this is the user interaction between the ATM machine and the user. One more example is the many hardware home appliances devices. For example, fan, light, switch. This is the operated by users for touch the hardware devices. We can see the definition of the user interface is this is the definition of user interface. The user interface is the interaction between the user and machine. Goal of this interaction is to allow the effective operations and control the machine from the user. This is the controlled by the human, means user. For example, in computer system, user give input from keyboard and mouse, touch screen in ATM and mobiles, manual button in many electronic devices. These are the all examples of user interface. These all are controlled by human. This is called the user interface. It means that the use of that interface is enjoyable. All the interface is enjoyable. The main purpose of the user interface is to enable user to interact with the system by the communicating with them. मीन्स मेरा कहने का मीन्स ये है ऑल जितने भी ये डिवाइसेस हैं हमारे इंटरेक्शन द कम्युनिकेशन दिस इज इंटरेक्टेड विद द सिस्टम के साथ जो हमारा इंटरेक्ट होगा बाई कम्युनिकेटिंग. नाउ डेज मैन द user interface for operating computer and mobile इज ऑपरेटिंग सिस्टम. मेरा कहने का मतलब मीन्स ये है प्रेजेंट डीज हम चाहे मोबाइल्स की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, हमारा मेन यूजर इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. हम जो हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जब यूजर के द्वारा किसी हार्डवेयर को ऑपरेट किया जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा ही किया जाएगा. मीन्स ऑपरेटिंग दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर. मेन इंटरफेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम. We can say the types of operating system: graphical user interface GUI. This is GUI. In the GUI, all the data is input by keyboard and mouse. When in the screen, the many buttons and many icons are controlled by. And second is web user interface. Web user interface is the graphical is a type of GUI. This is operated when the
डिजाइन ऑफ वेब पेज। जब हम इंटरनेट यूज़ करेंगे तो इंटरनेट जब हमें केवल इंटरनेट यूज़ करते समय ही हमें वेब यूजर इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज द मेन। एंड थर्ड इज टच स्क्रीन इंटरफेस। टच स्क्रीन इंटरफेस इज अवेलेबल इन ATM machines and mobile phones. When we get the input by screen touch screen, I get the output. And another is command line interface. Command line or interface is available in computer system. Here get the input by command lines and get the output in output screen. And another is hardware user interface. hardware user interface Hardware user interface is available in hardware devices, means the home appliance devices, for example washing machine, TVs, digital clocks. These in the devices many buttons are operated by the user. This is these are the types of user interface.